तो हालो मित्रों, सोमनाथ थी भूज जवा माटे केटली बसों छे, केटला वागे निकळवानी छे, कया कया स्टेशन पर थईने निकळवानी छे, ए संपूर्ण माहिती अने लोकेशन साथे टाइम टेबल तमारे जोवुं छे तो तमे दरेक माहिती मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा मित्रों मेळवी शको छो। अने आजे पण मित्रों तमने लाइव माहिती तमने देखाडवानो छुं टाइम टेबल अने लोकेशन साथे। तो विडियोनी अंदर बन्या रहेजो। सोमनाथ थी भूज जवा माटे कई कई बसों छे, केटला वागे निकळवानी छे अने कया रूट पर थईने निकळवानी छे। मित्रों चेनलनी अंदर नवा छो तो खास आपणी चेनलने सब्सक्राइब कर लेजो अने आ एप्लिकेशन द्वारा तमने बधी ज माहिती आपवामां आवी रही छे। तो एप्लिकेशन कयुं छे ने एनी पण तमने मित्रों माहिती मळी रहेशे। तो विडियोनी अंदर बन्या रहेजो। चलो आपणे विडियोनी शरूआत करीए। तो मित्रों पहला ज नंबरनी बस छे मित्रों दीव थी भूज छे, वोल्वो छे, जे दीव थी मित्रों निकळे छे 12 वागे बपोरे, जे मित्रों उना तमने मळशे 12 ने 20 मिनिटे, कोડીनार 1 ने 5 मिनिटे, सोमनाथ 1 ने 45 मिनिटे, वेरावल 2 ने 40 मिनिटे, केशोद 3 ने 30 मिनिटे, जूनागढ़ 4 ने 10 मिनिटे, राजकोट 4 ने 45 मिनिटे, माधापुर राजकोट 6 ने 25 मिनिटे, मोरबी 6 ने 40 मिनिटे, माळिया हाईवे 8 ने 10 मिनिटे, भचाउ 9 वागे, गांधीधाम 9 ने 40 मिनिटे, आदिपुर 10 वागे, अंजार 10 ने 15 मिनिटे अने भूज 10 ने 50 मिनिटे तमने मित्रों पहोंचाडी देशे। तो बीजा नंबरनी बसनी मित्रों बात करिए, सोमनाथ थी नखत्राणा छे, जे स्लीपर छे मित्रों। तो केटला वागे निकळवानी छे ने कया रूट पर थईने निकळवानी छे ए जोईए। तो सोमनाथ थी निकळे छे 1 ने 45 मिनिटे, जे बपोरे मित्रों। जो तमने वेरावल मळशे 1 ने 55 मिनिटे, केशोद 2 ने 40 मिनिटे, वांथली 3 वागे, जूनागढ़ 3 ने 20 मिनिटे, जेतपुर 4 ने 15 मिनिटे, वीरपुर गोंडल 4 ने 35 मिनिटे, राजकोट 5 ने 35 मिनिटे, टकरा 5 ने 45 मिनिटे, मोरबी 6 ने 15 मिनिटे, मोरबी जूनू बस स्टेन्ड 6 ने 30 मिनिटे, भचाउ 7 ने 55 मिनिटे, गांधीधाम 10 ने 30 मिनिटे, आदिपुर 10 ने 40 मिनिटे, अंजार 10 ने 50 मिनिटे, भूज 11 ने 40 मिनिटे अने नखत्राणा 12 ने 40 मिनिटे तमने मित्रों पहोंचाडी देशे। तो तीजा नंबरनी छे मित्रों ए पण दीवनी छे। तो आ मित्रों कोડીनार थी भूज छे ए जोईए एक्सप्रेस छे, जे मित्रों कोડીनार थी निकळे छे 6 ने 15 मिनिटे सांजे, जे मित्रों तमने सोमनाथ मळशे 7 वागे, वेरावल 7 ने 10 मिनिटे, केशोद 7 ने 43 मिनिटे, वांथली 7 ने 55 मिनिटे, जूनागढ़ 8 ने 50 मिनिटे, जेतपुर 10 ने 5 मिनिटे, वीरपुर गोंडल 10 ने 20 मिनिटे, राजकोट 11 ने 25 मिनिटे, मोरबी 1 ने 10 मिनिटे, सामखियाળી 2 ने 35 मिनिटे, भचाउ 2 ने 55 मिनिटे, गांधीधाम 4 ने 5 मिनिटे, आदिपुर 4 ने 15 मिनिटे, अंजार 4 ने 25 मिनिटे अने भूज 5 ने 15 मिनिटे तमने मित्रों पहोंचाडी देशे। तो तीजा नंबरनी ए पण मित्रों जोई लईए, दीव थी भूज छे, वोल्वो छे, जे मित्रों निकळे छे दीव थी 6 वागे सांजे, जे मित्रों उना तमने मळशे 6 ने 20 मिनिटे, कोડીनार 7 ने 5 मिनिटे, सोमनाथ 7 ने 45 मिनिटे, वेरावल 8 ने 50 मिनिटे, केशोद 9 ने 30 मिनिटे, जूनागढ़ 10 ने 10 मिनिटे, राजकोट 10 ने 45 मिनिटे, माधापुर राजकोट 12 ने 25 मिनिटे, मोरबी 12 ने 40 मिनिटे, माळिया हाईवे 2 ने 10 मिनिटे, भचाउ 3 वागे, गांधीधाम 3 ने 40 मिनिटे, आदिपुर 4 वागे, अंजार 4 ने 15 मिनिटे अने भूज 4 ने 50 मिनिटे तमने मित्रों पहोंचाडी देशे। हवे एप्लिकेशन कयुं छे मित्रों, अहींया घणी बधी बसों छे, तमारे जोई लेवानी छे मित्रों। આવી રીતે બસનું લોકેશન બતાવશે અને જે પણ બસ ચાલુ હશે એનું તમને અહીંયા રનિંગ લખેલું બતાવશે। આ બધી બસો હાલની અંદર ચાલુ નથી, મતલબ કોઈ પણ બસો છે હજી હવે નીકળવાની છે અને જે બસો ચાલુ હશે અહીંયા લખેલું આવશે રનિંગ। હવે આ બસનું એપ્લિકેશન કયું છે તો એપ્લિકેશન આપણે જોઈ લઈએ। તો એપ્લિકેશનનું નામ છે GSRTC લાઈવ। આ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાંથી મળશે મિત્રો। જેવું તમે એપ્લિકેશનને ઓપન કરશો એટલે તમારી સામે આ ટાઈપનું પેજ આવશે। તો અહીંયા સર્ચ બસનું ઓપ્શન છે, એની ઉપર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે। જેવું તમે એની ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયા બે ઓપ્શન છે, ક્યાંથી ક્યાં જવાનું છે, ક્યાંથી ક્યાં, તમે ક્યાંથી ક્યાં જવા માગો છો તો અહીંયા આપણે લખી લઈએ, દાખલા તરીકે
સોમનાથ. તો આવી રીતે આપણે લખ્યું હતું, તો સોમનાથ આવી ગયું છે. ચલો અહીંયા સોમનાથ ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું. અહીંયા આપણે ભુજ લખી લઈએ. તો મેં અહીંયા ભુજ લખી લીધું છે અને અહીંયા એક ઓપ્શન છે સર્ચ બસ, એની ઉપર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે. તો જેટલી પણ બસો મિત્રો આપણે હાલ જોઈને બધી બસો તમારી સામે આવી જશે. બસ એની ઉપર એક એક ઉપર ક્લિક કરીને તમારે એનું ટાઈમ ટેબલ અને જો બસ ચાલુ હોય તો એનું લોકેશન જોવા માટે પણ અહીં ઓપ્શન છે. તમે લોકેશન પણ જોઈ શકો છો ક્યાં થઈને નીકળવાની છે. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે માહિતી તમને ગમી હશે. વધુ એસટી બસની માહિતી મેળવવા માટે ખાસ આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો મિત્રો.